Good morning, students. Good morning, sir. In the last class, we have studied the starters, 3-point starter, 4-point starter, and 2-point starter. Today's topic is efficiency, and it is denoted by eta. Suppose we have to determine the efficiency of a generator. Suppose a shunt generator is there. This should be IA. So suppose the load current is I, and this is ISH current. That means the field shunt current. So from that generator, we can write IA is equal to I plus ISH means, have you understood this? IA is equal to I plus ISH. Yes, sir. Okay. Then tell me what is the definition of output or efficiency, or you can say in terms of ratio of two quantities. What are these? Tell me what is called So efficiency. output power over input So power. output power and input power. Now this is the ratio between output power to the input power. And whenever we determine the efficiency, we have to calculate the efficiency in terms of electrical power. Because in case of generator, we provide mechanical power and we get the output of electrical power form. So, and in case of motor, we provide the electrical power and we get the mechanical power. Though there is a conversion of mechanical power to electrical and electrical power to mechanical, so don't get confused. We have to write the efficiency in terms of electrical power, because the electrical quantity are measured easily with respect to or compared to mechanical quantities. With the help of voltmeter and ammeter, we can easily measure the voltage and current. So, for generator, which quantity is electrical quantity? Output or input? Tell me, which quantity is electrical input or output for generator? So load is output. Load is output. What is actually in which form? It is electrical form or mechanical form? Electrical function. In electrical form. That means the output is in electrical form. So we have to write this output and input in terms of electrical form. In case of generator, in case of generator, the output is electrical form and the input is
In which form? Electrical or mechanical? Mechanical. Mechanical form. So we have to convert the input in terms of electrical. So we can write output power by output power plus loss. We can write the input as output power plus loss. Ayush, have you understood? Manish, Yes, sir. Khushbu, Yes, sir. Jishan. So, if the output voltage is V, the voltage is V. So tell me how much output we are getting from that generator. Tell me, Ayush, how much electrical power we get from that machine or generator? So V into I. V into I. Good. V into I. This is the output. So we have to write the output also V into I. And what are the losses in case of DC machine? How many losses are there? So four. There are four losses. Four or five. So 4 to 5 said. Four Five, or sir. five. How many types of losses are there? Four types or five types? 5 times, sir. Five types. What are these? Sir, core loss, Core loss, copper loss, copper loss, brass loss, brass loss, mechanical or strain loss, sir. mechanical and stray loss. Good. In these five losses can broadly classified into two categories. One is called variable loss, another is called constant loss. These five losses can be classified into two categories. One is called variable loss, another is called constant loss. The variable losses are, or you can say the variable loss is which depends on the armature current. That means whenever we change the load, the armature current should be changed. That's why we can say the losses which is dependent on armature current, these are basically variable, and those which is basically not depend on armature current is called constant loss. So tell me, uh, core loss is depend on armature current or not? Is the core loss depends on armature current? Ayush, Manish, Khushbu, Nisham, anyone? कोर लॉस करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, पहले फिर बोलिए कॉपर लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिर कोर लॉस में आ गए. करंट के ऊपर से. फर्स्ट टेल मी, the copper loss is depend on armature current or
the voltage, Armature current. armature current. So this is basically a variable loss. So we write here Ia square Ra. Then tell me whether core loss depend or not. Yes, sir. Basically, core loss does not depend on armature current. It depends on basically the voltage. How much voltage is generated? It's depend on voltage. So core loss is depends on the voltage. Though the supply voltage or generated voltage more or less constant, so we can write the core loss as a constant loss. And tell me whether the brass voltage loss is depend on current or the voltage. Brass voltage drop. Voltage. It's depend on voltage, how much voltage is generated or how much current will flow through the brushes. So current. It depends on current, how much current flowing through the brushes. Good. Suppose uh, this is suppose VD is the brass voltage drop and IA is the current passing through the brass. The armature current which is passing through the brass. So these two losses, that means the copper loss and the brass voltage loss, depends on the armature current. Rest of three are not depend on armature current. These three are depends on the voltage, how much voltage is generated. So we can write these three are constant loss. So these three losses, which is basically constant loss, is denoted by P suffix K. The power, P means power, K means constant. Have you understood? Ayush, Manish, खुशबू, जिसान, समझ में आया? Yes, repeat कर दो बेटा सर. बोलिए. हमारे पास जो 5 लॉस थे उसे हम ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. एक को बोल रहे हैं वेरिएबल लॉसेस एंड अनदर इज कॉल्ड कांस्टेंट लॉसेस. वो जो 5 था उसमें हम देख रहे हैं कि ना दो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मतलब लोड अगर चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाएगा. इसीलिए हम उसे वेरिएबल लॉस कर रहे हैं. और बाकी जो 3 था मतलब कोर लॉस, mechanical loss and stray loss. These three are called constant loss because these three losses are depends on the how much voltage is generated on that generator. So mm, can I write IA is near equal to I? Ayush, can I write IA is equal to I? हम क्या लिख सकते Yes हैं sir. इसे? अगर कब लिख फील्ड सकते करंट हैं? बहुत कम है तो. कब लिख सकते हैं? सर जब फील्ड करंट बहुत कम हो. Normally it is seen that the field current is very less than the armature current and the load current. So we can neglect the field current with respect to output current or load current, or you can say with respect to armature current. So we can write
The armature current is near equal to the load current. So we have to replace here the Ia by I. So the output is Vi by Vi plus I square Ra plus VBD I plus Pk. After that, we have to divide the numerator and denominator by Vi. After that, we have to divide the numerator and denominator by Vi. So what we get after dividing the numerator and denominator by Vi, we get this. आयुष, मनीष, देखो समझ में आया कि नहीं? So what is PK, sir? Pk is the constant losses. The three losses are constant, which basically depends on voltage. Though the voltage of generator or motor nearly constant, so we write these three losses are constant losses. Pk is denoted that three losses. I can write this. Yes. If suppose I have to get the efficiency maximum, if I have to get the efficiency maximum, then we have to get D should be minimum. If we get the value of D is minimum, then we can write eta G is maximum. हम लिख सकते हैं ना ये? Yes, sir. Then we have to get the condition for maximum efficiency. We have to determine what is the condition to get the maximum efficiency. Suppose a term D is, what is the value of D is 1 plus I Ra by V plus VBD by V plus Pk by Vi. This is the value of D. So tell me, when the value of D is maximum, or sorry, minimum, what should be the condition? You have learned in mathematics class. Suppose there is a equation D is equal to 1 plus I Ra by V plus VBD by V plus Pk by Vi. When this D becomes minimum, the condition should be the first derivative should be 0. The condition is the first derivative of that equation should be 0. So after getting derivative, what should be the derivative? What is the derivative of 1? 0. 0. Good. Plus
RA by V is constant. And what should be the derivative of I with respect to I? 1 1. Good. Then uh, what should be the derivative of VBD by V? Though the VBD and V is constant, because we consider the brush voltage drop is constant and the supply voltage is constant. So the term VBD by V is constant term. So what is the value of derivative of constant term? 0 0. Then PK is constant and V also constant. What should be the derivative of 1 by I with respect to I? minus 1 by I square. Minus 1 by I square. Good. And to get the minimum, to get the minimum value, to get the minimum value, we know that our condition is this should be 0. So we can write by I square. So from this equation, what we write? Pk is equal to I square into Ra. Can I write this? देखिए आयुष लिख सकते हैं कि नहीं सर? Yes, sir. So to get the maximum efficiency, what should be the condition? We can say loosely, or we can say we can say the constant loss is equal to the variable loss. So the maximum condition to get the efficiency, what is the condition? Condition for maximum efficiency. What is the condition? Pk is equal to I square Ra. Pk is constant loss and I square Ra is variable loss. So we can say if the constant loss is equal to the variable loss, then the efficiency become maximum. Have you understood, Manish? Khushbu? Yes, sir. Okay. Now the next part is testing part. That means we have to determine the efficiency, losses, temperature rise of a machine. The procedure by which we determine the efficiency or the temperature rise or losses, that is called testing. Basically, there are two types of testing available by which we can determine the efficiency and losses, all these things. Number one is called direct loading, and number two is indirect loading.
There are basically two types of method or two types of testing are available. One is called direct loading and another is called indirect loading or indirect method. In direct loading, what we do, we have to connect with supply as well as we have to provide the load. Suppose there is a generator. Suppose there is a generator, we have to determine the efficiency of that generator. We have to provide the mechanical energy as a input and we have to provide the electrical load so that we can determine the efficiency of that generator. ये समझ में आया? देखो डायरेक्ट लोडिंग क्या है मनीष? इसमें हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे और जो लोडिंग है मतलब लोड जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए बल्ब देना है, कुछ ऐसे करके लोड देना है। जो आउटपुट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है और इनपुट में हम कितना पावर दे रहे हैं, इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यह डायरेक्ट लोडिंग मतलब ये सचमुच हमें करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, वो ऐसा डायरेक्ट लोडिंग नहीं देते। मतलब थोड़ा सा हटके उसके हम कुछ मेथड यूज करेंगे, उससे हम एफिशिएंसी निकाल देंगे उससे। अच्छा, तो डायरेक्ट लोडिंग actually the correct method is direct loading, but why we prefer indirect loading? Because the direct loading is costly and the space requirement for direct loading is huge, or you can say the load arrangement is very tough, so we prefer the indirect method. मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है आपके घर के पास, जो ट्रांसफार्मर है उसका लोडिंग और लोड क्या है मनीष? यस सर। आपके घर के पास जो एक ट्रांसफार्मर होता है ना, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी आता है घर में, हाँ उसका सर। उसका लोड क्या है? उसका सर आउटपुट लोड सर हाँ, उसका लोड कौन सा है? आपके घर में 21 जो किलोवाट फैन सर। है, लाइट है, ये सब है ना? यस सर। मतलब आपके जो एरिया है उस सब घर में जो लोड है उसे हम क्या एक लैब में अरेंज कर सकते हैं? नहीं सर। कर नहीं सकते। इसीलिए एक्चुअली अगर मान लीजिए मशीन का पावर ज्यादा है, हम अगर छोटा मशीन यूज करेंगे तो डायरेक्ट लोडिंग यूज करेंगे। लेकिन जब बड़ा मशीन यूज करेंगे, उसका एफिशिएंसी डिटरमाइन करेंगे, तब हम इनडायरेक्ट मेथड चूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट लोडिंग मेथड इज प्रेफर फॉर लो पावर मशीन एंड इनडायरेक्ट फॉर हाई पावर मशीन। समझ में आया खुशबू? यस सर। And in indirect loading method, there are basically two tests which have done. One is called Swinburne Swinburne test, and number two is Hopkinson test. There are basically two tests we have done in indirect method, that is to determine the efficiency of high power machine. One is called Swinburne test, another is called Hopkinson test.
Now topic is swine one test. ये टेस्ट सिर्फ जिस मशीन का मान लीजिए फील्ड कांस्टेंट है उस मशीन में ही हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक मोटर को नो लोड में रन करा रहे हैं, तो क्या होगा तब? इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक मशीन को नो लोड में रन करा रहे हैं। अगर नो लोड में रन करेगा तो मोटर क्या ज़्यादा पावर लेगा कि कम पावर लेगा? कम लेगा, कम पावर लेगा। कम करंट लेगा। तो मतलब वो मतलब ये टेस्ट इकोनॉमिकल है। कम पावर अगर लेगा तो इकोनॉमिकल होगा ना। If a test takes less power, or you can say if a test consume less power, then we can say that method is economical। हम इसे इकोनॉमिकल बोल सकते हैं ना। अगर कम पावर लेगा तो यस सर। और देखिए इस टेस्ट में दो हम क्या कर रहे हैं, एक मोटर को नो लोड में घुमा रहे हैं सिर्फ। इसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब स्पेस क्या ज़्यादा लगेगा? वहाँ पर स्पेस क्या ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा। मतलब वो जो पहले वाला जो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट के प्रॉब्लम था, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। In case of direct loading test, there is two basically problems are available or problems are there. One is the load arrangement, and number two, the test is less economical. These two problem we can easily resolve with the help of swine one test, because though the machine is running on no load, so there is consumption of energy is less, and though the motor is rotated with no load, or you can say though the motor is rotated no load or performing in no load test, so there is no load requirement for this test. So this method is basically economical and less space required test. How much output power
of that test or of that experiment? What is the output power of that experiment? मनीष बोलो, इसमें आउटपुट कितना आ रहा है? एक मोटर को हम नो लोड में घुमा रहे हैं, इसका आउटपुट पावर कितना है? आयुष, खुशबू, VIA लॉस। वी आई नॉट मतलब ये जो वोल्टेज दिख, मान लीजिए हम वी वोल्टेज दे दिया, वो वो तो इनपुट होगा ना, ये तो मोटर, मान लीजिए ये तो मोटर इनपुट होगा वी इंटू आई जी। आउटपुट कितना है? आउटपुट कितना है बोलिए? तो टेस्ट हम नो लोड में कर रहे हैं, तो मतलब आउटपुट कितना है? सर आउटपुट तो जीरो होगा सर। गुड, द आउटपुट इज जीरो। We know that input is equal to output plus what? लॉस। Though in this experiment the output is zero, that means we can write input is equal to loss। हम लिख सकते हैं ना? देखिए, हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, हम लोग उसे नो लोड में घुमा रहे हैं मोटर को, मतलब वो कोई आउटपुट नहीं, मतलब जो इनपुट ले रहा है वही लॉस होगा। तो इनपुट कितना है यहाँ पर? V इंटू आई जीरो, ये है इनपुट। लॉस कितना टाइप होता है? ब्रॉडली हम अगर उसे देखेंगे, we classify broadly, there are two types of losses. One is called variable loss and another is called constant loss। हम इसमें ब्रास लॉस को कांस्टेंट लॉस में दे रहे हैं और नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर करंट जो जा रहा है वो बहुत कम है, इसीलिए हम ब्रास वोल्टेज ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगा ना? देखिए, इनपुट कितना है? द इनपुट इज V into I zero is equal to loss. There are two types of losses available. One is called variable loss, another is called constant loss. And the variable loss is IA zero square RA plus VBD IA zero plus PK. Though the value of VBD IA zero is very less, we can neglect that term. So we can write here VI zero is equal to IA zero RA plus Pk. So what should be the value of Pk? Vi0 minus Ia0 square into Ra. Is it so or not? Ayush? यस सर। So हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या है एक्चुअली, कौन सा टर्म हमें आया, डिटरमाइन किया कौन सा टर्म? देखिए V कौन सा मीटर दिखाएगा, वो जो V है एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे V कौन सा टर्म दिखाएगा, कौन सा मीटर?
वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर दिखाएगा। आई जीरो कौन सा दिखाएगा, कौन सा मीटर दिखाएगा? एम मीटर। एमीटर दिखाएगा। और आई ए जीरो, उसके लिए कौन सा एमीटर दिखाएगा? ये एमीटर दिखाएगा उसे। तो ये है एल, ये है ए और ये है ए। व्हाट इज दैट ब्लॉक? उस ब्लॉक का क्या नाम है बोलिए? सो 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर, गुड। और आर ए हमें कहाँ से मिलता है? आर ए हमें कहाँ से मिलता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। कहाँ से मिलता है? वो इधर नेम प्लेट में लिखा होता है, और नहीं तो हम एक मल्टीमीटर के मदद से वो दो आर्मेचर के टर्मिनल में हम अगर मेजर करेंगे तो वो आ जाएगा। आया समझ में कैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे? यस सर। वो जो आर्मेचर एक्चुअली मोटर में और कितना टर्मिनल रहता है? चार। दो आर्मेचर के लिए, दो फील्ड के लिए। जो आर्मेचर टर्मिनल होगा ए एंड डबल ए, उसके अंदर अगर हम एक मल्टीमीटर टर्मिनल को दे दिया तो इतना कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो दिखा देगा। So from that experiment, we determine basically the constant losses. What we do by this experiment, or what we determine the by this experiment? Ayush, सर पी की रूट है सर। मतलब constant losses. कांस्टेंट लॉस। Only that term, only the constant losses of that machine we just determine by Swinburne test. Have you understood? Manish, यस सर। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या किया, और इस टेस्ट से हम क्या किया? जस्ट कांस्टेंट लॉस को डिटरमाइन किया कि कितना है उस मोटर का कांस्टेंट लॉस कितना है, वो सिर्फ डिटरमाइन किया। कैसे किया? एक नो लोड में मोटर को घुमाया, आउटपुट कुछ नहीं है, मतलब आउटपुट जीरो है। तब इनपुट इज इक्वल टू लॉसेस होगा। लॉसेस कितना होता है? वेरिएबल लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस होता है। वेरिएबल लॉसेस का वैल्यू कितना है? आई ए जीरो स्क्वायर आर ए, और कांस्टेंट लॉसेस का वैल्यू पी के कंसीडर किया। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हम सिर्फ जो कितना कांस्टेंट लॉस होता है वही डिटरमाइन करें, यही काम है बस। फिर थियोरेटिकली हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में मनीष? मनीष का आयुष, समझ में आया? दानिश, यस सर। खुशबू, यस सर। ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस। आयुष, प्रेजेंट सर। खुशबू, यस सर। जीशान, यस सर। शमशाद, यस सर। यश, यस सर। दानिश, असगर, यस सर। प्रवीण, यस सर। मनीष। प्रेजेंट सर। Okay, that's all for today. Okay, you may leave now.